Now we'll start with microbes as biocontrol agents. Microbes as biocontrol agents. It is the use of biological methods for controlling plant diseases. It is the use of biological methods for controlling plant diseases. Not only plant diseases and also insects, that means, and pests. So it reduces the use of chemical insecticides and the pesticides. So by using the biological method of controlling, the use of insecticides and pesticides have been lowered. Because these chemicals are toxic and extreme harmful. Because these chemicals are toxic and harmful. So these chemical insecticides and pesticides should be avoided. This is extremely harmful to animals and humans. Not only humans, also to various animals in the nature. So इसलिए ये सब हार्मफुल केमिकल है, तो अल्टरनेट मेथड है बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करना, ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि अगर हम केमिकल यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के रूप में केमिकल यूज करेंगे, so that causing the pollution to the nature, to the environment, and being toxic. These are highly harmful to animals and also to humans. So how to use the biological control or how to use the biocontrol method for pest control? How can we use that for the pest control? So various examples are there, like that. Suppose we can use the natural predators. एक बड़ा सा इंसेक्ट एक छोटा इंसेक्ट को वो उसको खाता है, तो इससे प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप. So predators that act upon the prey. So the process is known as predation. So उसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट हमारे क्रॉप्स को खराब कर रहा है या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस इंसेक्ट का कोई प्रेडेटर होगा. तो अगर उस एरिया में उस प्रेडेटर को हम अप्लाई करेंगे, देन दोज इंसेक्ट्स population will be decreased, hence the crops can be rescued. So biocontrol agents में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. So एग्जाम्पल्स क्या है? एक एग्जाम्पल से अगर एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स.
ladybird beetles. This is one example. Ladybird, जैसे ये beetle, उसमें red and black marking होता है. That feeds upon aphids. Aphids are the plant lice. The aphids, the insects that are called as plant lice, which can suck the plant juice. So if you apply the ladybird beetle, then the aphids can be checked. So aphids are known as plant lice. So this is one example of the predation. The other examples are also there. Dragonflies that feeds on mosquitoes. So insect that is called as dragonfly that destroy the mosquitoes. So another bacteria is there that is known as Bacillus thuringiensis. This is helpful in the microbial biocontrol agent to control butterfly caterpillar, its larva. So Bacillus thuringiensis, you know that. Shortly called as the BT. Bacillus thuringiensis, shortly called as BT. So it helps in microbial biocontrol agent. So it acts as microbial biocontrol agent. Microbial biocontrol agent to control butterfly caterpillar. To control larvae of the larvae. The larvae is known as the caterpillars. Larvae of butterfly. Larvae is also known as caterpillars. Butterfly के जो larvae है, it is called as caterpillar. So Bacillus thuringiensis are helpful in this regard. And this is available in sachets on dried spores, and that can be mixed with water and spread over the area. So this can be available. ये छोटे छोटे पैक में अवेलेबल होता है, तो अवेलेबल इन sachets as dry spores. So that is mixed with water and spread over the land. So that sachets contain dry spores. So those dry spores mixed with water and spread over the agricultural field. और ये जो स्पोर्स होता है, अवेलेबल सैचेट्स होता है, ये स्पोर्स जब लार्वा इसको खाते हैं, सो द लार्वा बिकम डेड. So when larvae eats the spores, the toxin release and the
larva get killed. So these spores, dried spores, so these spores eaten by larvae, after eaten by larvae, the toxin is released inside their body. Toxins released in them and they get killed. So this bacterial disease kills the caterpillar. So this bacterial disease by Bacillus thuringiensis, it can kill the caterpillar larvae but do not affect the host. So the bacterial disease kills the caterpillar but do not harm other insects. So bacterial disease kill the caterpillar but do not harm other insects. So BTGs को जो बैसिलस thuringiensis जो टॉक्सिन प्रोडक्शन करता है उसका जो जीन है उसको जीन को बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग has been incorporated in certain plants. So like the cotton plant, brinjal plant, tomato plant. So those are the known as the transgenic plants. So transgenic plants are also prepared which get themselves resistance from these insect larvae. So transgenic plants developed by genetic engineering. So transgenic plants, that is developed by genetic engineering, and that contains Bt genes. Become resistant to insect pests. So that contain the Bt genes, so they become resistant. Insect pests. So example is Bt cotton, Bt tomato, Bt brinjal. So what do you mean by biopesticides? The biological control of pests is known as the biopesticides. That include bioinsecticides and bioherbicides. So you know that the herbs or the weeds, the unwanted plants grow in the agricultural field. So those are known as herbs. So to kill the herbs, the biological method is applied, then it is called as bioherbicides. So bioherbicides and bioinsecticides together called as biopesticides. So biopesticides control pests, and pests are what? These are weeds plus insects.
together called as pests. So biopests are two types. One is the bioinsecticides and other one is the bioherbicides. Bioinsecticides and bioherbicides. So bioherbicides are biological control of weeds by some living organisms. So we will first detail explain the bioherbicides. That refers to biologically control of weeds. So biological control of weeds by some living organisms. So biological control of weeds by some living organisms. तो इसमें क्या सब एग्जाम्पल्स आएगा? So insects feeding on a specific weed. That means कौन सा इंसेक्ट कौन सा वीड को फीड कर रहा है. अगर हम देखेंगे कि कैसे ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, किस ढंग से होता है, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कंट्रोल करते हैं. सपोज मान लीजिए एक इंसेक्ट एक वीड को खा रहा है, तो अगर हम उस इंसेक्ट को अप्लाई करेंगे देन दैट वीड्स विल बी एलिमिनेटेड. सो इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए स्पेसिफिक वीड, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. Insects feeding on a specific weed. Insects feeding on a specific weed. And number 2 is use of microbes which causes diseases. Use of microbes which cause diseases. Use of microbes which cause diseases. So ये दो तरीका है और ये कहां पर एक्चुअली करेंगे. जो माइक्रोब जो डिजीज करेंगे वो इन वीड्स. तो एक तो वीड्स को स्पेसिफिक इंसेक्ट खाएंगे तो वीड कंट्रोल हो गया. दूसरा वीड्स में अगर बीमारी हो जाएंगे, अगर माइक्रोसोम अप्लाई करेंगे तो उस वीड्स अगर डिजीज अफेक्टेड हो जाएगा देन दैट वीड्स कैन बी किल्ड. सो व्हाट आर द डिफरेंट वीड्स? So how to control? Example we will giving. So Opuntia. Opuntia is a plant. It is an unwanted house or weeds. So Opuntia को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जो prickly pear cactus है. So we write over here the examples. Opuntia, prickly pear cactus. Opuntia, it is prickly pear cactus. So how can be Opuntia controlled? So controlled by Cactoblastis, or this is known as the cochineal insect. Controlled by कैक्टोब्लास्टिस. एक इंसेक्ट है जो कि ओपुंचिया को फीडिंग करता है. तो इसको हम बोलते हैं कैक्टोब्लास्टिस इंसेक्ट प्रेडेटर.
जो कि प्रेजेंट करता है अपुंच्या को, दैट इज नोन एज कैक्टोब्रैसिस insect predator, or can be called as the cochineal insect. It is also known as cochineal insect. Another example, if you give milkweed vines. Example number 1. milkweed vines. ये कुछ वीड्स है, इसका नाम है milkweed vines. ये एक्चुअली ग्रो करता है, कहां पर ये ग्रो करता है? milkweed vines in citrus orchard. In citrus orchard, these vines grow. Milkweed vines grow in citrus orchard. So how it can be controlled? It is controlled by divine. And वो divine क्या है? A spores of fungus. So this is controlled by divine. That is spores of fungus. So कौन सा फंगस का ये स्पोर्स है डिवाइन? That is Phytophthora plasmivora. So उस फंगस का नाम है Phytophthora. Plasmivora. So this is the fungus. उसका स्पोर्स को यूज किया जाएगा. तो स्पोर्स को that is known as divine. सो ये दुनिया का पहला माइको हर्बिसाइडल डिस्कवरी है. सो माइको मतलब फंगाई. तो फंगाई जो कंट्रोल करता है हर्ब्स को, तो फंगाई सोर्स से अगर हम हर्बिसाइड जैसा यूज करेंगे तो द फर्स्ट डिस्कवर वन इज डिवाइन. तो दिस इज फर्स्ट माइको herbicide discovery. If we go for the other examples, ये अभी यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. एक अपुंच्या को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एंड सेकेंड वन इज milkweed vines को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. Now we'll move to the third example. This is northern giant vetch. Northern giant vetch एक weed है. Third example, northern giant vetch. This weed grow in rice fields. राइस फील्ड में अगर ये वीड ग्रो करते हैं तो राइस फील्ड जो क्रॉप्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है. तो इसको भी कंट्रोल किया जाता है अनादर फंगाई के स्पोर्स से, और स्पोर्स का नाम दिया गया है कोलेगो. सो कंट्रोल बाय कोलेगो. स्पोर्स ऑफ फंगाई. एक फंगस का ये स्पोर है, और वो फंगस का क्या नाम है जिससे कोलेगो अपटेंट है? कोलेटोट्रिकम. आपको मालूम है कोलेटोट्रिकम इज द ड्यूट्रोमाइसिस. ओके, ड्यूट्रोमाइसिस इसका अंदर, उसका पूरा नाम है कोलेटोट्रिकम ग्लोइयोस्पोरोइडेस. उस फंगाई का नाम है कोलेटोट्रिकम. ग्लोइयोस्पोरोइडेस.
Polydoticum gliosporides is the fungi from which the spores are obtained, which is known as colego. And this is the water hyacinth. Water hyacinth was the dominant in United States. Water hyacinth. So एक स्टेट है उसका नाम है फ्लोरिडा, यूएसए. सो वहां पर ये वाटर हाइसिंथ was the dominant house that caused the objection in the growing or the development of the natural crops. तो इसको भी कंट्रोल किया गया. स्पोर्स ऑफ फंगस सेटकोस्पोरा रोडमानी. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पोर्स ऑफ फंगस. Controlled by spores of fungus that is known as Cercospora. Cercospora rodmani. So these are the different examples which indicate the controlling of the herbs, or these are known as the bioherbicides. Next we will go to the bioinsecticides. So by biological activity or by applying the living organism, how insects can be controlled. That is known as bioinsecticides. Next we'll go to bioinsecticides. Living organisms or their products used to kill or repel specific insects. Those are known as bioinsecticides. Living organisms or their products. Either हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं या उसका बॉडी का किसी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, और इसका कोई प्रोडक्ट्स लाइक इसका म्यूकोस हो, इसका सलीवा हो, these are called as products. So living organisms or its products used to kill or repel specific insects. Used to kill or repel specific insects. तो एग्जाम्पल क्या है? कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो कि नेचर में अवेलेबल है, और कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और ट्रांसजेनिक बनाया गया है. सो फर्स्ट हम जाएंगे नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स. So various examples are there. First is we will discuss rotenone. So rotenone is the natural insecticide. This chemical can kill insects. So this chemical is obtained from roots of Derris elliptica. एक प्लांट है, उसका नाम है Derris elliptica. उसके रूट से ये केमिकल ऑब्टेन होता है जो कि नेचुरल है, यानी ऑर्गेनिक है. तो ये कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं है. So obtained from roots of Derris elliptica. So Derris elliptica is the plant from its root. So rotenone is obtained. Next is nicotine. You know that tobacco plant. It is called as nicotina.
टबाकम, निकोटियाना टबाकम। तो फ्रॉम द टबाको प्लांट उसके लीफ से एक केमिकल ऑब्टेन होता है, दैट इज नोन एज निकोटाइन। दैट केमिकल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन controlling the insects. Number 2 is nicotine, obtained from leaves of tobacco plant. Scientific name is Nicotiana tabacum. Number 3 is azadirachtin. This is the natural organic product or a chemical natural from the leaves of neem plants. Known as azadirachtin. The neem plant का जो scientific name है, Xerox name, that is called as azadirachtin. The azadirachtin is the chemical name. So the neem plant का जो नाम है, इसका नाम है azadirachta. So next example is pyrethrum and cynerine. Pyrethrum and cynerine. This substance also can kill insects. So these are natural insecticides from Chrysanthemum and Cinerifolium. So two chemicals obtained from a plant, that is Chrysanthemum Cinerifolium. Obtained from Chrysanthemum Cinerifolium. Another is thurioside. This is the chemical or the product of the Bacillus thuringiensis bacteria. Already know that helps in genetic engineering for the production of many transgenic plants. So that is obtained from Bacillus thuringiensis. It is a bacterium obtained from bacterium, that is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. So
So these are some examples of the natural insecticides. So what are the other methods? Other methods how to control the insect pests. The other methods are sterilization strategy, insect hormones, the pheromones, insect hormones or the pheromones. So various other methods are also there. So now we go to other methods for controlling the insects. So what are the other methods for controlling the insects? It's not in an NCERT. These are extra points. So number one is, the first one in the other method, it is the sterilization strategy. So what is done in this method, sterilization strategy? Large number of sterile males are released, so insect population declines. A large numbers of sterile males are released. So those sterile males cannot do the reproduction, so hence insect population declines. That means mating without production of offsprings. That is mating without production of offsprings. Number two process is by applying pheromones. So all of you know that pheromones are the chemical messengers which cause the communication or alarm sending signals or for attracting males. So applying the pheromones, we can trap the insects. Suppose female insect release the pheromones, so males are attracted. So suppose we collect the pheromones and spray it on a paper, and the paper is placed in a box, and in the box some certain kind of glue is attached. So glue is applied. So if we keep that pheromone containing box with glue in the field, all the males will attracted to that pheromones and they will be trapped in the glue. So that is called as by applying pheromones. It's number two. So pheromone traps, these are called pheromone
traps. And number 3 is by applying molting hormone or juvenile hormone. That is called ecdison. मोल्टिंग हार्मोन अगर हम अप्लाई करेंगे, मोल्टिंग हार्मोन, so these hormones also kill the insects by applying ecdison. So ecdisons are the juvenile hormone or known as the molting hormone. Juvenile hormones are known as the molting hormones. Or certain techniques are there, that is known as the catch trap crops. So what do you mean by the catch trap crops? Certain crops are there which can catch the insects, because insects are feeding those crops. So that is known as catch trap crops. So those crops are known as the catch trap crops. So around the major crop, some early growing crop is cultivated or arranged into strips. So बीच में मेजर क्रॉप रह जाएगा, अराउंड मेजर क्रॉप्स. सो सपोज मान लो कि बीच में मेजर क्रॉप रहेगा, तो उसके चारों तरफ कुछ अदर क्रॉप्स हम, अर्ली ग्रोइंग क्रॉप्स हम लगा देंगे, तो वो क्रॉप्स में इंसेक्ट ट्रैप हो जाएंगे और अंदर तक नहीं आएंगे, मेजर क्रॉप हमारा सेव हो जाएगा. So around major crops, some early growing crops are sown. Around major crops, some early growing crops are sown in strips, and those early growing crops known as trap crops. In strip, that is called as trap crops. That is known as trap crops. So insects get attracted towards trap crops and can be easily killed by cutting and destroying those trap crops. So insect उस trap crop की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके साथ, वो क्रॉप के साथ इंसेक्ट अटैच हो जाएगा. So insects get attracted towards trap crop. Insects get attracted towards trap crop and can be easily killed by cutting and destroying the trap crops. So बीच में रह जाएगा मेन क्रॉप, चारों तरफ हम ट्रैप क्रॉप लगा देंगे तो ट्रैप क्रॉप में इंसेक्ट रुक जाएगा. तो एग्जाम्पल कुछ देते हैं, भिंडी एंड सीसेम अराउंड द कॉटन फील्ड्स. अगर हम
अराउंड कॉटन फील्ड्स, कॉटन फील्ड हमारा हो गया मेन क्रॉप, कॉटन फील्ड्स हो गया, ये मेन क्रॉप हो गया, उसके चारों तरफ भिंडी या ओकरा एंड सिसेम, जो तिल होता है ना उसको बोलते हैं सिसेम, भिंडी और ओकरा एंड सिसेम इज ग्रोन। सो ये दोनों हो गए ट्रैप क्रॉप, कॉटन फील्ड के चारों तरफ भिंडी लगा देंगे या फिर सिसेम, तो दीज आर ट्रैप क्रॉप्स। सो ये ट्रैप क्रॉप्स अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो कौन सा इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, तो भिंडी को अट्रैक्ट होगा जैसिड एंड स्पॉटेड बोलवर्म। सो भिंडी अट्रैक्ट करेगा, भिंडी अट्रैक्ट एक इंसेक्ट होता है जैसिड, जैसिड एक इंसेक्ट होता है जो कि भिंडी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अनदर है स्पॉटेड बोलवर्म एंड स्पॉटेड बोलवर्म, ये भी एक इंसेक्ट है। ये दो इंसेक्ट को भिंडी रोक लेगा, ट्रैप क्रॉप रोक लेगा, जैसिड एंड स्पॉटेड बोलवर्म। दूसरा सिस्टम वो अट्रैक्ट करेगा रेड हेयरी कैटरपिलर, अट्रैक्ट रेड हेयरी, जिसका सर रेड होगा, सो अट्रैक्ट रेड हेयरी कैटरपिलर, so that attracts the red hairy caterpillar. So these are few other methods how to control the insects. So these methods can act as insecticides and can save our main crops. So there are some important informations, कितना एग्रीकल्चर इंसेक्ट के द्वारा, पेस्ट के द्वारा कितना एग्रीकल्चर क्रॉप हमारा लॉस होता है। सो विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Agricultural loss due to pests is about 30%. Agricultural loss due to pests is about 30%. What do you mean by the smoother crops? Smoother crops क्या होता है? तो smoother crops are those crops that do not allow weeds to grow nearby. वो कुछ सिक्रेशन करते हैं कुछ केमिकल्स, उसके कारण वो अलाउ नहीं करते हैं दूसरे जो होते हैं वीड्स होते हैं, तो वो smoother crops do not allow those weeds to grow nearby because smoother crops secrete certain chemicals. वो कुछ केमिकल्स को केमिकल सिक्रेशन करते हैं और by the chemicals the weeds cannot grow nearby the smoother crops.
next is the smoother crops. So write down this. So what is smoother crops? These crops do not allow weeds to grow nearby. To grow nearby, secretion of certain chemicals अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, मेन क्रॉप के साथ स्मूदर क्रॉप करेंगे, तो क्रॉप रोटेशन विद दिस स्मूदर क्रॉप्स दैट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स. तो स्मूदर क्रॉप की एग्जांपल्स क्या है? तो क्या क्या सब एग्जांपल्स है स्मूदर क्रॉप्स की? बार्ली, राय, sorghum, sunflower, these are all smoother crops. Barley, rye, sorghum, sunflower, barley, rye, sorghum, sunflower, marigold, soybean, millet, etc. तो एक होता है, एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट को, तो इसमें हम देखते हैं कि से हार्मफुल पेस्ट कंट्रोल होगा या वो मारा जाएगा, लेकिन सोसाइटी या इन्वायरमेंट को जो हेल्पफुल इंसेक्ट्स है वो कैसे सेव हो जाएगा, यानी एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को अफेक्ट करेगा. सो इट इज द सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट टू कंट्रोल ए सिंगल पेस्ट on one or more crops. इसको बोलते हैं सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट. तो आईपीएम क्या है? इट इज द सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट.
is the sustainable pest management which control a single pest. Sustainable pest management to control a single pest on one or more crops. जो सिंगल पेस्ट को ये कंट्रोल करेगा वो एक क्रॉप के ऊपर अफेक्ट करता है हो या फिर बहुत सारे क्रॉप पर अफेक्ट करता है, तो ये सिंगल पेस्ट को कंट्रोल सो दैट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर conserved and ecologically sensitive area is treated. तो इसका मतलब जो हार्म करने वाले इंसेक्ट्स है दैट गेट किल्ड, बट द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वो सेव होगा, वो मरेगा नहीं. सो दैट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व्ड. और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहां पर अप्लाई होते हैं? जहां पर एक सेंसिटिव एरिया हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जब ट्रीट किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया जाएगा, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा. सो व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड, दिस प्रोसीजर इज अप्लाइड. So with this, your microbes used as biocontrol agent is completed. We come to the last part of this chapter, that is microbes used as biofertilizer. So now we'll move to microbes used as biofertilizers. Microbes used as biofertilizer. अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, देन दैट कैन कॉज द पोल्यूशन इन नेचर. अगर हम रिप्लेस कर देंगे केमिकल फर्टिलाइजर का, बायोलॉजिकल सोर्स का फर्टिलाइजर डालेंगे, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल. सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ chemical fertilizers in agriculture cause environmental pollution.
So there is a need to switch over to organic farming. So there is a need to switch over. So there is a need to switch over to organic farming. So what is this organic farming? जिस क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको बायो फर्टिलाइजर देकर अगर हम ग्रो करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्रॉप्स ग्रोन बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स. सो क्रॉप्स ग्रोन बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स. और बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? व्हाट इज दिस बायो फर्टिलाइजर? जो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म्स दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी. Organisms that enrich nutrient quality of soil are called biofertilizers. So which organisms they act as biofertilizer, or which organisms that enrich the nutrient quality of soil? So main sources of biofertilizer are bacteria, and fungi, particularly cyanobacteria, जिसको हम बायोफर्टिलाइजर के रूप में अप्लाई करेंगे. So bacteria, cyanobacteria and fungi, they are the main sources of biofertilizers. So main sources of biofertilizers are bacteria, cyanobacteria, that is BZA, blue green algae, and fungi. So which are the bacteria useful for this purpose? So first is the rhizobium. All of you know that rhizobium is a nitrogen fixing symbiotic bacteria. Its species name is Rhizobium leguminosarum. So Rhizobium leguminosarum, symbiotic nitrogen fixing bacteria. It causes the symbiotic nitrogen fixation in roots of legume plants. It causes the root nodules of legume plant. It is a symbiotic nitrogen fixing bacteria. So it causes the nitrogen fixation in root nodules of legume plants. And you know about the legume plants, the pea family, pea, beans, various kinds of dal, soybean, groundnut, these all are included in these legume plants.
that belongs to Fabaceae family or Papilionidae family. Next is Azotobacter and Azospirillum. Two bacteria I am giving you. One is Azotobacter and Azospirillum. So how these two bacteria helpful? So Azotobacter and Azospirillum, free living nitrogen fixation in soil. That is free living bacteria, free living nitrogen fixation in soil. These two bacteria also nitrogen fixing bacteria, but that do not fix in any plant. That fix nitrogen in soil. That's why it is called free living. These are the free living nitrogen fixing bacteria. We will go to the other examples. So far we have discussed the bacteria, and it will be the other examples of fungi. You know that fungal filaments that associated with the roots of the gymnosperm and angiosperm, and that is known as mycorrhiza. That form mycorrhiza. You can follow the NCERT here. From the mycorrhiza, symbiotic association of fungal filaments with roots of the seeded plants. It is mainly in the members of genus Glomos of Basidiomycetes. So what is mycorrhiza? Symbiotic association of fungal hyphae with roots of higher plants or roots of seeded plants, mainly gymnosperms and angiosperms. So that includes mainly genus Glomos. The fungi that form mycorrhiza, इसका जो example है that is Glomos. ये fungi Basidiomycetes group का fungi है. So many members of the genus Glomos form mycorrhiza. तो यहाँ पर जो fungi जो symbiotic association है, fungi absorb phosphorus from the soil and pass to the plants. Okay. So यहाँ पर fungi absorbs minerals. So minerals में mainly phosphorus, and give to the plants. और इसमें plants का भी कुछ benefit होता है.
जैसे कि प्लांट्स के साथ अगर माइक्रोरेजा एसोसिएशन हुआ या फंगल हाइफा एसोसिएशन हुआ तो प्लांट्स बिकम रेजिस्टेंट to many soil-borne diseases. By association with mycorrhiza, plants are benefited. Like, so by mycorrhiza, जिस प्लांट में mycorrhiza एसोसिएशन होगा, plants are benefited. That is, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? नंबर 1, प्लांट्स बिकम रेजिस्टेंट टू द मेनी डिजीजेस. और जो सॉइल बॉर्न जो डिजीज होता है तो प्लांट्स बिकम रेजिस्टेंट. जो रूट के थ्रू जो पैथोजेंस एंट्री होते हैं प्लांट में, सो दैट इज रेजिस्टेड बाय प्लांट्स. सो नंबर 1 इज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. Resistance to root-borne pathogens. That is number 1 benefit of the plant. Number 2 benefit is tolerance to salinity and drought. So इसका मतलब है जो environmental factors है, drastic factors और extreme factors, उसको भी plant tolerate कर सकता है. उसका tolerance capacity increase हो जाती है. So tolerance to salinity and drought. So tolerance to salinity and drought. And increase in plant growth and development. तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा क्योंकि फंगाई हाइफा वो वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करके प्लांट को सप्लाई करेगा. इससे प्लांट्स विल नॉट बी डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल कंटेंट. सो प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी. तो इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट विल गो टू सियानोबैक्टीरिया. हमने पहले बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद फंगाई के बारे में डिस्कस किया. नाउ विल गो टू सियानोबैक्टीरिया. तो सियानोबैक्टीरिया इज नोन एज BCA, ब्लू ग्रीन algae. So earlier it was considered as BCA, blue green algae under the algae group. Now it is renamed as Cyanobacteria and considered under Monera kingdom. So these microbes that is widely distributed in aquatic and terrestrial environments. और इसके बहुत सारे Cyanobacteria एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. So widely distributed in aquatic and terrestrial environment. Widely distributed in aquatic and terrestrial environment, and many can fix atmospheric nitrogen. So many Cyanobacteria BCA can fix atmospheric nitrogen. The example is Anabella, Nostoc, Oscillatoria. These are the Cyanobacteria.
So these are the cyanobacteria or blue green algae that can fix the atmospheric nitrogen. So by cyanobacteria, by its property, nitrogen fixation property, so in paddy fields, cyanobacteria play an important role of fertilizers, biofertilizers. So in paddy fields, this can fix the nitrogen, soil. So soil में nitrogen fix कर सकते हैं. So paddy field में cyanobacteria plays an important role. Cyanobacteria play an important role as biofertilizers. So cyanobacteria serve as important biofertilizers in paddy field, rice field. Rice field में ये एक important biofertilizer है, cyanobacteria. So cyanobacteria also add organic matter to the soil and increase fertility. और क्या function है? Also add organic matter to the soil and increase, also add organic matter to the soil and increase its fertility. So you can remember the examples of this cyanobacteria, Anamena, Nosta, Bacillatoria. So these examples will come in the exam. So this chapter includes much more informations and data. You have to remember all these informations. So now this chapter, microbes in human welfare, is completed. The next chapter will start strategies for improving food production or crop improvement, or it is also known as plant breeding. Thank you.